अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफाइन द ग्रेविटेशनल फोर्स। द ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू massive bodies. The first property of gravitational force is that it is always attractive in nature. यहाँ पर दो बाल पड़े हुए हैं। ये बाल अगर इस बाल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो ये बाल भी इस बाल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। सो इट मीन्स दैट दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। जब ये अट्रैक्टिव होगा इन नेचर सो इट मस्ट बी पॉजिटिव। नाउ व्हाट इज द सेकंड प्रॉपर्टी? The second property is it is non-contact force. Forces दो तरह के होते हैं, एक होते हैं contact forces और दूसरे होते हैं non-contact forces. Non-contact forces वो forces होते हैं जिसमें दो बॉडीज का फिजिकल कंटेक्ट में होना लाजमी नहीं है। यहाँ पर हम देख सकते हैं एक एप्पल ट्री है, इस एप्पल ट्री से एक एप्पल गिर रहा है। ये अर्थ इस एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन ये अर्थ और ये एप्पल दोनों कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन फिर भी इस एप्पल को ये ग्राउंड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। सो इट मीन्स दैट दिस फोर्स इज नॉन कांटेक्ट फोर्स। द थर्ड प्रॉपर्टी इज it is directly proportional to the product of the masses of the two bodies. Meaning this force is depend upon the product of the both masses. ये देखिए, this is a body 1 m1 and this is body 2 which is m2. F1 is the force on m1 due to m2 and F2 is the force on m2 due to m1. This F1 and F2 both are equal in magnitude, so F1 is equal to F2, which is equal to the product of the both masses m1 and m2, m1 cross m2. Now the fourth property, it is inversely proportional to the square of the distance between them. Two bodies के सेंटर से जो फासला है वो फासला r है। So this force is inversely proportional to the square of this distance. यहाँ पर हम देख सकते हैं that this F1 and F2 are inversely proportional to square of this distance r, and g is the gravitational constant. The fifth property is it is the weakest force in nature. Nature में four forces है, strong force, weak force, electromagnetic force and gravitational force. This gravitational force is the weakest one in nature. The sixth property is it is a conservative force. अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है अगर हम इस फोर्स से वर्क करें और वो वर्क इंडिपेंडेंट होगा ऑन द पाथ फॉलोड, तो दिस फोर्स वी कैन से दैट दिस फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ये फर्स्ट कंडीशन है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। दूसरा कंडीशन ये है दैट द वर्क डन ऑन दिस फोर्स इन अ क्लोज पाथ मस्ट बी इक्वल टू 0। फर्स्ट कंडीशन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर 2 पॉइंट्स है A एंड B। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन A एंड B is said path 1, and similarly it is path 2 and this is path 3. The work done on path 1 is equal to W1, the work done on path 2 is equal to W2 and the work done on path 3 is equal to W3. If all the works on these 3 paths are equal, then we can say that this force is a conservative force. We can say that W1 is equal to W2 and W2 is equal to W3. So this force is a conservative force. The seventh property, it is a central force. ये big objects and this is small objects. ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को इस तरह भी तो खींच सकता था,
ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को इस तरफ भी तो खींच सकता था, लेकिन नहीं, ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींच रहा है. सो इट मीन्स दैट दिस फोर्स इज अ central force. This force acts on the line joining these two bodies. The last property is it is a long range force. This force is a long range force. We can say that this sun attracts every planet in the universe towards itself. Similarly, all these planets attract the sun towards, and the distance between sun and all the planets is large, so we can say that it is a long range force.